Act 3 begins when Macbeth has already become the king of Scotland. So this is the first scene in which we will see Macbeth and Lady Macbeth as the king and queen of Scotland. So here Banquo is talking to himself. So Banquo is saying about Macbeth. Macbeth, though has it now, मतलब you have it now. And Macbeth तुमको मिल गया. क्या King Corda Glamis as the weird sister promised. So Macbeth is saying, Banquo is saying about Macbeth, Macbeth, you have now King Corda Glamis as the weird sister means which is promised. So this is the first and the last soliloquy of Banquo. Last because he would die very soon, and first because we get to know his insight of the mind for the very first time. So Banquo is talking to himself and he says, Macbeth, you have it now. Though refers to Macbeth. Macbeth, you have it now. King Corda Glamis as the weird sister promised. Macbeth, तुम बन गए Thane of Glamis, तुम बन गए Thane of Corder और तुम बन गए King of Scotland as the witches had promised. But, and I fear you have played most foully for it. So Banquo is saying कि तुम Glamis Corder King बन तो गए हो, but I fear कि Macbeth तुमने जरूर कुछ गलत किया to achieve it. Indirectly pointing to the murder of Duncan. So Banquo is talking to himself and he says, Macbeth, you have now become King Corda Glamis as the witches promised, but I fear, हमको डर है कि तुमने कुछ गलती किया, कुछ गलत किया है. Yet it was said by witches ने कहा था कि it should not stand in thy posterity. And witches said कि Macbeth के future generation को ये नहीं मिलेगा. मतलब kingship will not be given to Macbeth's future generation. Banquo is saying कि Macbeth तुम किंग कॉर्डा ग्लैमिस बन गए और हमको डर है कि इसमें जरूर कुछ तुमने घोटाला किया. Yet I fear you have played most foully for. Banquo is saying कि हमको डर है कि तुमने जरूर इसको पाने में कुछ घोटाला किया. Yet it was said it should not stand in thy posterity. मतलब तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिलेगा. Posterity मतलब future generations. But that myself, Banquo, would be the root and father of many kings. Banquo is saying, witches said, Macbeth will not be the root and father of king. Macbeth will be the king, but his future generation will not be the king. But I, myself, Banquo would be the root and father of many kings. He will be the starting point from which many kings would come. If there comes true for them, Banquo is saying, अगर ये बात Macbeth के लिए सच है, which is the prophecy that Macbeth will be Thane of Glamis, Thane of Corder, King of Scotland. As upon you, Macbeth, the specious sign. Banquo is saying कि तुम्हारे लिए Macbeth, which is the specious तो sign हो गया, glorious हो गया, सत्य हो गया, truth हो गया. Why? By the verities on thee made good. Verities मतलब prophecies on thee made good. मतलब उनका प्रोफेसी तो तुम्हारे लिए सच हो गया, मैकबेथ के लिए. May they not be my oracle as well? So Macbeth is saying कि अगर ट्रुथ उनके लिए हो गया प्रोफेसी, तो क्या मेरे लिए ये oracle नहीं बनेगा? Oracle were the wise men who whatever said became true. So witches are compared to oracle according to Macbeth. So Macbeth says कि Banquo says कि अगर Macbeth के लिए ये प्रोफेसी सच हुआ है तो क्या Banquo के लिए नहीं होगा, मेरे लिए नहीं होगा? So Banquo begins this soliloquy by saying that Macbeth, you have become Thane of Corder, you have become Corder, you have become Glamis, you have become king, according to the weird sister, according to the witches. And I fear, Banquo is saying कि उनको डर है कि जरूर तुमने कुछ घोटाला किया Macbeth. You played most foully for it. Yet it was said, ये बोला गया था witches के prophecy में, that it should not stand in thy posterity. मतलब मैकबेथ के फ्यूचर जनरेशंस को ये किंगशिप नहीं मिलेगा.
बट दैट बैंको, माई सेल्फ, बैंको का स्पीच है तो बैंको बोल रहा माई सेल्फ वुड बी द रूट एंड फादर ऑफ मेनी किंग्स, कि मेरे जरिए से मेरे फ्यूचर जनरेशंस में हम रूट होंगे, मेरे सूट से बहुत सारे मेरे फ्यूचर जनरेशंस में किंग होंगे. सो इसे इफ इट कम्स ट्रू फॉर देम, अगर विचेस का प्रोफेसी सच हुआ है, एज अपॉन मैकबेथ द स्पीच इज शाइन, मैकबेथ का प्रोफेसी, मैकबेथ के लिए प्रोफेसी सच हो गया है. सो विल दैट नॉट बी ट्रूथ फॉर मी? विचेस का प्रोफेसी अगर मैकबेथ के लिए सच हुआ तो बैंको के लिए भी होगा. मे दे नॉट बी माई oracle as well. So may they not be my oracle as well. So here, Banco is also a common human being who feels greedy, who feels tempted. He says कि अगर verities on thee made good, अगर मैकबेथ के लिए प्रोफेसी सच हुआ है, so will it not be my oracle as well, कि मेरे लिए सच नहीं होगा? And set me up in hope, क्या मेरा उम्मीद आगे नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा? So this proves that Banco is also a human being who feels tempted. He says that prophecies have become true for Macbeth. Uh, the prophecy sign on Macbeth. Will it not be his oracle? Will it not be his truth? Will it not be his prophetic truth? Oracle were the wise man in Greek mythology, who whatever said became true. So witches are compared to oracle. So here is Banco saying कि अगर witches मैकबेथ के लिए ओरेकल बन सकती है तो मेरे लिए भी तो बन सकती है. So he says it will set me up in hope, मतलब मेरा भी उम्मीद जग रहा है कि शायद मेरा भी फ्यूचर जनरेशन स्कॉटलैंड का राजा बन सकता है. बट हश नो मोर, इसे कीप क्वाइट टू हिमसेल्फ, हश नो मोर किंग किंग. सो इतने में ऐलान हुआ कि बामुला या होशियार, बादशाह सलामत, आई मीन मैकबेथ इज कमिंग. So trumpet sounded, enter Macbeth as king. First time Macbeth is coming as a king in the play. And Lady Macbeth as queen. So the prophecies of witches have become true, right? So Macbeth is followed by Ross, Angus, attendants, servants. So Macbeth meets Banquo. Macbeth says to his wife, "Here is our chief guest." इनसे मिलिए, आज हम लोग का जो कोरोनेशन पार्टी होगा, बैंक्वेट सेरेमनी, मैकबेथ के किंग बनने का सेरेमनी में, ये उसमें चीफ गेस्ट है. सो बैंको इज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट. लेडी मैकबेथ इज सेइंग, इफ ही हैड बीन फॉरगॉटन, अगर बैंको को भूल गया, हम लोग भूल जाते, it would have been a gap in our feast and all thing unbecoming. So Lady Macbeth is saying if Banquo would not have been invited to the coronation banquet ceremony, the celebration for which celebration in respect to Macbeth becoming the king of Scotland, अगर बैंको नहीं आता, अगर बैंको को नहीं बुलाया जाता, so there would have been a gap in the feast. So पूरा पार्टी एक अधूरा रह जाता, खाली रह जाता, और all thing unbecoming, सब चीज फिर बेमतलब का हो जाता. Macbeth. Tonight we hold a solemn supper, sir, and I request your presence. Macbeth is saying कि आज हम एक तो solemn supper रखेंगे, मतलब एक formal dinner है. So I request your presence. So Macbeth invites Banquo formally uh, as a chief guest to the banquet ceremony. Macbeth is saying tonight, आज. We hold a solemn supper. Macbeth is saying कि आज हम एक तो formal dinner के लिए सबको invite करें. So I invite you to come to it. Bangkok. Let your highness command upon me, to which my duties are with most indissoluble tie forever knit. Bangkok is saying, my lord, highness, my lord, you command upon me, आप order दीजिए. And my duties to you is an indissoluble tie forever knit. Indissoluble tie मतलब कभी न टूटने वाला. Forever knit. So he's saying my relationship to you is, sir, so forever knit. हमेशा ऐसा बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता. तो बैंको इज सेइंग योर हाइनेस कमांड अपॉन मी. बैंको बोल रहा है कि सर आप कमांड कीजिए, आप कमांड कीजिए, आप कमांड कीजिए, और हम बैंको इज सेइंग हम ऐसा फॉलो करेंगे, और मेरा और आपका रिश्ता तो एक अटूट बंधन है. माई ड्यूटी इज टू यू इज एन इनडिसॉल्युबल टाइम, कभी ना टूटने वाला एक ऐसा बंधन है. मैकबेथ, राइट यू दिस आफ्टरनून. मैकबेथ इज सेइंग सर आज आप, बैंको से पूछ रहा है कि विल यू राइट दिस आफ्टरनून, ना क्या
will you go for a ride? Because Macbeth wants to know all the details, so he's asking Banquo, will you go for a ride? Banquo says, yes, sir, my lord, I will. So Macbeth is asking, wants to ask you more questions, but he's talking in a roundabout manner so that he gets the fact correct. I mean, he wants to send the murderer to kill Banquo, so he wants to know the details specifically. So Macbeth is saying, we should have else desire your good advice, which else should have been both grave and prosperous. So Macbeth is saying, if you would not have gone, I would have desired your good advice. अगर तुम नहीं जाते तो हम तुमसे सलाह मशवरा करते, खैर तुम जाओ, और हम जो एडवाइस मांगते हैं विच वुड बी वेरी ग्रेव एंड प्रॉस्परस, वो बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस होता है, वो बहुत सीरियस, ग्रेव मैंने सीरियस, प्रॉस्परस मैंने प्रॉफिटेबल. सो मैकबेथ इज सेइंग if you would not have gone, else otherwise I would have wanted your good advice. अगर बैंको नहीं जाता horse ride में, so Macbeth is saying I would have wanted your advice, which would be very serious and very profitable in the day's meeting, council में meeting. So Macbeth is saying to Banquo कि बैंको अगर तुम नहीं जाते horse riding पे तो हम तुमसे advice लेते जो बहुत ही grave होता, मतलब serious होता और बहुत ही important होता आज के meeting में, लेकिन खैर but we will talk tomorrow. How far do you write? Macbeth को सिर्फ इतना पूछना था, बाकी सब फालतू बात था, just to come to this point. So Macbeth is saying to Banquo, how far you will write? कितना दूर तक तुम write करोगे? So Banquo could have easily said a place name, but he also is a politician. He knows that specific details should not be given. So Banquo says, as far my lord as will fill up the time between this and supper. So Banquo is saying कि अभी से लेके डिनर तक जो टाइम है उस बीच में मैं ट्रेवल करूंगा. Go not my horse the better, I will become the borrower of the night for a dark hour or twain. Twain मैंने two. He says अभी से लेके ट्विक्स मैंने between this time, मतलब जब वो बात कर रहा है between the dinner time he will write. And if his horse is not better, मतलब घोड़ा अगर अच्छा से नहीं चला, then he will become a borrower of the night. मतलब रात से वो 2 घंटा लेके आएगा. मतलब suppose let's say the sun sets at 5. So if he will take 2 hours, it will be 7. So Macbeth is saying, "Get go not my horse the better." अगर मेरा घोड़ा तेज नहीं चला, so I will take 2 hours from the night and come. Macbeth. Fail not our feast. Macbeth is time and again saying to Banquo, don't fail our feast. So here is a dramatic irony that Banquo will come as a ghost and he will really become indissoluble type forever. It means उनका रिश्ता सच में ऐसा हो जाएगा कि मौत के बाद बैंको और मैकबेथ मिलते ही रहेंगे. So Macbeth is saying, fail not our feast. Banquo is saying, my lord, I will not fail. And he will literally not fail. I mean, even after death, Banquo will come as a ghost to meet Macbeth. That is in Act 3, Scene 4, Macbeth. Now, Macbeth again wants to get some news, get some information. But again, he talks just to hide his main question. We are our bloody cousins are bestowed in England and Ireland, not confessing their cruel parricide. They saying कि हमारे cousins जो है वो इंग्लैंड एंड आयरलैंड में छुपे हैं, अपने गलती को नहीं मान रहे. पैरिसाइड मतलब मर्डर द फादर. फीलिंग द हियरर्स इज स्ट्रेंज इन्वेंशन. इज सेइंग कि ये रूमर फैल रहा है कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग. सो इज सेइंग कि हमारे 2 कजिन्स Malcolm and Donald, they are not confessing the parricide. Parricide means murder of one's own father. They are feeling the hearers with strange invention. वो लोग जो तो कहानी फैला रहे, rumor फैला रहे, और जो rumor है वही हकीकत. So Macbeth is saying that our bloody cousins, means Malcolm and Donald, they are bestowed, hidden in England and in Ireland. So Macbeth says कि Malcolm and Donald इंग्लैंड और आयरलैंड में छिपे हैं और वो अपना गलती नहीं मान रहे. कौन सा गलती? पैरिसाइड. पैरिसाइड मीन्स मर्डर ऑफ देयर ओन फादर. एंड फीलिंग द हियरर, सुनने वाले के कानों में वो अजीब अजीब कहानी बना बना के बोल रहे, र्यूमर फैला रहे. बट ऑफ टुमारो, मतलब कोई बात नहीं, तुम जाओ. मैल्कम डोनाल्ड बेल का बात कल होगा, उनके पैरिसाइड्स का बात कल होगा, तुम जाओ, तुम लोग कल बात करेंगे. But wherein we shall have the cause of state craving us jointly. He says कि तुम नहीं जाते, so we have discussed about the cause of state government का कुछ बात था, craving us jointly, जिसमें दोनों का दरकार था. You two horse, बोला ठीक, कोई बात नहीं, जाओ. Okay, bye. And you till you return at night. So he says goodbye till you come at night. Was Fleance with you? He says कि Fleance भी तुम्हारे साथ जा रहा है.
Banco says, yes, my lord, our time does call upon us. Means we are getting pressed with time. We are getting late. Uh, Banco is saying, sir, हम लोग का लेट हो रहा है हॉर्स राइड में जाने. Macbeth says, okay, I wish you all the best. May your horse run very swift, very fast, and sure of foot. May tu तेज तेज तुम चलो. And I do command you to the back. Macbeth is saying, जाओ. हम तुमको ऑर्डर दे रहे, तुम घोड़ा के हवाले हो जाओ. Actually, Macbeth has become a hypocrite. He's planning his best friend murder, but he's time and again saying all the best, all the best, all the best, planning his murder and saying all the best. So Macbeth is saying to Banquo, I wish you all the best. I wish your horses run very swift. बोले जाओ तुम्हारा घोड़ा बहुत तेज चले. Sure of foot, मैंने उनके कदम डगमगाए ना. And I command you to the back, means तुम उन घोड़े के हवाले हो जाओ. Farewell. Banquo goes away. Now Macbeth says, let every man be the master of his time. So there were many people, Ross Angus attendants, Lady Macbeth, servants. So Macbeth says, now every man, every person is the master of his time. अब सब अपने time का मालिक है. मतलब you can have your own time. You're no more slave for time being. Till 7 at night. 7 बजे तक सब कोई अपने टाइम का मालिक है. 7 बजे से तो बैंक्वेट सेरेमनी है. To make society sweeter welcome. He says कि जाओ सब कोई अपने अपने वक्त को एंजॉय करो. टू मेक सोसाइटी स्वीटर वेलकम, मतलब शाम को जो पार्टी होगा उसको बेहतर बनाने के लिए वी विल कीप आवर सेल्फ टिल सपर टाइम अलोन. कि थोड़ा बेहतर रिफ्रेश होने के लिए हम अपने आप को शाम को 7 बजे तक अकेले रखना चाहते हैं. एक्चुअली इसको ना सोसाइटी को स्वीटर वेलकम करना है, ना इसको आराम करना है. एक्चुअली मैकबेथ वांट्स टू टॉक टू द मर्डरर्स. Macbeth wants to talk to the murderers. So he says, okay, let every man be the master of the time. And we will keep ourselves alone till supper time. Till then, God be with you. Till then, भगवान तुम्हारे साथ हो. भगवान सच में उनके ही साथ होगा, मैकबेथ के साथ तो होने से रहे. So all go away. सब कोई चला गया. Okay, एक अटेंडेंट था. Macbeth is saying, sir, I have a word with you. इधर आओ. The servant comes to Macbeth. Macbeth says, attend this man ever pleasure. मतलब जिन लोगों को मैंने बुलाया तो वो आ गए. Attendants are saying, yes, sir, they are. वो लोग आ गए. Without the palace gate. Attendant is saying, हाँ sir, वो लोग आ गए. Without the palace gate, means outside the palace gate. Macbeth, bring them before us. Macbeth is saying, जाओ उन लोग को बुला के लाओ. मैंने दो मर्डर्स लोग को, दो जो लोग मर्डर करेंगे. So the servant goes to call the murderer. So this is the first soliloquy of Macbeth after the murder of King Duncan. So यहाँ पहला बार हम लोग मैकबेथ के अंदर क्या चल रहा है उसके मेंटल मेकअप में, उसके मेंटल स्पेस में we come to know. So here is Macbeth talking to himself for the first time, and we come to know how hollow, how shallow, how frustrated, disappointed, hopeless Macbeth is feeling. So Macbeth is saying to be thus is nothing but to be safely thus. Macbeth is saying king बनना important नहीं है, but एक safe king बनना important. But the irony is, no king in the history of this world has ever been safe, right? No human being is safe. And king, they are more vulnerable. They are more prone to attack. They are more prone to being removed from the throne. But here is Macbeth living an illusion of security, having an illusion of security. And he says, to be thus is nothing, but to be safely thus. King बनना important नहीं है, safe king बनना important. Our fear in Banco stick deep. He says कि मेरा जो deep rooted डर है बैंकों के लिए ना बहुत ज्यादा है. So he admits, because he is admitting to himself, so there's no shame to him. Okay? So Macbeth says, he is talking to himself and he says कि king बनना important नहीं है. To be thus is nothing but to be safely thus. King बनना important नहीं है, safe king बनना important. Our fear in Banco stick deep. He says कि मेरा डर जो है बैंकों के लिए बहुत deep rooted है. क्यों? Because Banco has a royalty of nature. Banco एक रॉयल इंसान है. Banco एक वफादार इंसान है. Banco एक committed इंसान है. That reigns which we fear. So Banco's character is ruled by royalty, goodness. Banco एक अच्छा इंसान है. उसके चरित्र को, कैरेक्टर को goodness rule करता है. So he says, I'm afraid of Banco because Banco has goodness in him. He is ruled by positivity. It is much he dares. Banco बोल रहा है कि
मैंने बैंकों के बारे में बोला जा रहा है कि बैंको तो बहुत ही डेयरिंग है, इट इज मच ही डेयर्स, और द dauntless टेम्पर ऑफ हिज माइंड, एक तो वो dauntless मैंने फियरलेस उसका टेम्पर है, नीडर है, और नीडर होने के साथ साथ उसके पास विजडम भी है. So Macbeth is afraid of Banquo. Why? Because he is royal. His character is ruled by royalty, goodness, compassion. Next, it is much hidden. Or royalty matlab also is committed to the throne, is committed to positivity, because Banquo said in Act 2 Scene 1, okay, I lose none in seeking to augment it. I want to keep my bosom franchise and allegation clear. मैं अपने दिल को साफ रखना चाहता हूँ, अपने पोजीशन को बढ़ाने के लिए किंग से धोखा नहीं करना चाहता हूँ, किंग पोजीशन से. So here is Macbeth saying Banquo is very royal. He's committed to the kingship. He's committed to the concept of the king. उस जमाने में किंग लोग को होली माना जाता था. I mean, he's committed to the Duncan. It is much he dare. वो बहुत बहादुर है, और उसके dauntless मैंने fearless temper के साथ साथ उसके पास अकल है. उस अकल को यूज करके वो अपने बहादुरी को यूज करता है. The dauntless मैंने fearless temper of his mind, he has a wisdom to guide his valor. एक तो वो fearless है, और उसके fearlessness को गाइड करने के लिए उसके पास अकल भी है. So Banquo is very fearless. His fearlessness is guided by his wisdom. So he uses his bravery to guide his valor, to act in safety, ताकि वो safely act. There's none but he those being I fear. He's saying कि Macbeth is saying कि और कोई नहीं है. Macbeth is saying there's nobody else whom I fear except Banquo. There is none. कोई नहीं है. Macbeth is saying अपने आप से कि there is none. और कोई नहीं है. But him, Banquo, whose life I fear. And under him my genius is rebuked, as it is said, Mark Antony was by Caesar. He's saying that my genius is rebuked, as it is said, Mark Antony was by Caesar. So what is this genius? According to Christianity, that every person is guided by a positive force called genius. Okay. So it says, my positive genius is rebuked, is trifled, is small compared to Banquo. As it is said, Mark Antony was by Caesar. So here we are talking about Octavius Caesar, not Julius Caesar. So after the murder of Julius Caesar, the country was ruled by three people, the triumvirate, Octavius Caesar, Mark Antony, and Lepidus. So Mark Antony was not a man of character. He was not a man of integrity. He was not a man of good ethics. He was corrupt, and he was full of vices. So Macbeth is saying कि मेरा अच्छा है, गुडनेस, उसको जीनियस बोला गया है, इज रिब्यूट, वो छोटा है कंपेयर टू बैंक को. जैसे रोमन हिस्ट्री में मार्क एंटनी का कैरेक्टर छोटा था, गुडनेस उसका छोटा था कंपेयर टू ऑक्टेवियस सीजर. So it is said in the Roman history that the positivity of Mark Antony was less compared to the positivity of Octavius Caesar. Similarly, the positivity of Macbeth himself is saying, my genius is rebuked. मेरा positivity rebuked है, scolded है, छोटा है, trifle है, insignificant compared to the goodness of Banquo. So here is an important concept, important line, that Banquo is a good human being, because Macbeth is saying to himself कि मेरा जीनियस, मेरा अच्छाई बैंको के कंपैरिजन में कम है, जैसे मार्क एंटनी का अच्छाई कम था कंपेयर टू ऑक्टेवियस सीजर के कंपैरिजन में. So Macbeth compares himself with Mark Antony, and Macbeth compares Banquo with Octavius Caesar. As Macbeth feels inferior, छोटा, in terms of goodness compared to Banquo, ठीक वैसे ही Mark Antony felt छोटा, trifle compared to Octavius Caesar. Now Macbeth goes on into the memory lane to remember how Banquo has been brave, how he has been challenging to even witches. So he says he cheated the sister. And Banquo scolded the witches. So he must be brave. Normal people even can't scold
Darwan in the building. I mean, even when he has done something genuinely wrong. So here is Macbeth saying to himself that Banquo scolded the sister when they first put the name of king upon me. He's saying, "Is a pehli bar we met witches, and when witches put the name of king upon me, when a Macbeth, Banquo scolded them. If you remember, Banquo said, I neither want your favor, nor your hate. You just tell me what you want. If you can look into the seeds of time and say which grain will grow and which will not, then talk to me." This was the line. So Banquo scolded the weird sister. बैंको इतना बहादुर था कि बैंको ने विचेस को स्कोल्ड किया. तब when they first put the name of king upon me. So when witches put the name of king upon Macbeth, Banquo scolded them and bid them speak to them. On Macbeth is saying कि witches को Banquo ने बोला था, hey, हमको बोल, talk to me. Banquo was so daring. Banquo is so royal. Banquo is wise to guide his bravery, valor. Banquo scolded the witches. So these are the things that you need to remember for writing the character of Banquo. Banquo scolded the witches and said, speak to me. Then prophet-like, prophets are the messengers of God. Macbeth compares witches with prophet. Then prophet-like, they hailed him and Banquo as a line to the father of king. Matlab, which has said कि Banquo, you will be the father of many kings. And upon my head, Macbeth is saying कि मेरे सर पे witches ने एक fruitless crown रख दिया. मैंने एक crown जिसका कोई फल नहीं है, जिसका कोई benefit नहीं है, जिसका कोई फायदा नहीं है. And they have given me a barren scepter. Barren why? Because Macbeth did not have a son or a hair, H-E-I-R. So Macbeth is saying कि हमको जो scepter मिला, scepter means the rod that symbolizes the power of the king. In those days, king used to sit with that particular scepter which shows his royal power. So Macbeth is saying कि हमको जो crown मिला है ये खाली है, I mean खोखला है, hollow है, meaningless है, कोई बिना benefit के, क्योंकि इसमें टेंशन है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, होपलेसनेस है, चिंता है, इनसिक्योरिटी है. So Macbeth is saying my crown is fruitless and the scepter that I have gone is barren. Means scepter जो हमको मिला है in my grip, इसको बोलते हैं grip, the scepter that he has in the grip hence to be wrenched with an unlineal hand. मतलब ये scepter मेरे हाथ से छिन जाएगा with an unlineal hand without having any future generation. So Macbeth is saying कि बैंकों को witches ने prophecy दी कि his future generation will become king. So if his future generation will become king, the crown that I have got is fruitless. The scepter that I have got is barren. It will be taken away from me. Hence to be arranged with an unlineal hand. मतलब without मेरे future generations हमको छीन लिया जाएगा. No son of mine succeeding because he does not have any sons, so his sons will not succeed. He has got a barren scripture. He has got no lineage, no future generation. He's saying अगर ऐसा ही है, मैंने अगर ऐसा ही है कि बैंकों का फ्यूचर जनरेशन किंग बनेगा और मैकबेथ का नहीं, तो बोल रहा मैं क्या मैंने बैंकों के इशू मैंने चिल्ड्रन के लिए मैंने अपना दिमाग को गंदा किया है. Macbeth is asking himself that if Banquo's future generation will become king, did he find his mind, dirty his mind only for Banquo's future generation? He's saying for holy Duncan have I murdered. किसके लिए? Banquo के future generation के लिए Macbeth killed the holy Duncan. Put rancor in the vessel of my peace. He's saying I put disturbance in my mind. Why did I do this for Banquo's future generation? Only for them. He's saying only for Banquo's future generation, my eternal jewel means soul given to the common enemy of man. He's saying I have given my soul, my Atma, to devil. For whom? For Banquo's future generation. Now Macbeth is filled with regret. He's saying Banquo बहादुर है, Banquo royal है, Banquo intelligent है, वो उसके intelligence उसके बहादुरी को guide भी कर सकता है. He's saying Banquo इतना बहादुर था, he scolded the witches, Banquo को future generation king बन जाएगा. So he's saying for Banquo's issue, मैंने future generation, have I filed my mind? When I have made my mind dirty. For Banquo's future generation, he has destroyed the peace of his mind. He's saying for Banquo's future generation, I've given my soul, my Atma, my ruh, my conscience to the common enemy of man means devil. For Banquo's future generation, the seeds of Banquo, Banquo's future generation. Rather than so,
मैकबेथ इज सेइंग कि इससे पहले कि बैंकों का फ्यूचर जनरेशन किंग बने, कम फेट माने किस्मत, इनटू द लिस्ट माने द प्लेस वेयर पीपल फाइट, इट्स कॉल्ड लिस्ट, अरेना, द रिंग वेयर बॉक्सिंग हैपेंस, ही सेज आओ किस्मत, कहाँ, रिंग में माने अरेना में, कुश्ती के अखाड़े में, एंड चैंपियन विथ योर टर्न्स, हमसे लड़ो और हमको तुम, किस्मत हमसे लड़के हमको चैंपियन बना दो. Now, it seems to me that Macbeth has gone to his utter limit of ego. Because challenging luck, come fate into the list. मैंने किसको बुला रहा अखाड़े में? काउंसिलर को नहीं, एमएलए को नहीं, चीफ मिनिस्टर को नहीं, प्राइम मिनिस्टर को नहीं, डेस्टिनी को, लक को. Now, nobody can fight with destiny. Nor can you fight, nor can I fight, nor can Macbeth fight. But here is Macbeth saying, come fate into the list. आओ किस्मत, कहाँ, अखाड़े में, एंड चैंपियन भी, मैंने हमको जिता के राजा बना. इतने में वो सर्वेंट जो गया था मर्डरर्स को बुलाने, वो आ गया. Re-enter the attendant is two murderer, and he opens the door, and they so Macbeth says to the servant, go, stay there and wait outside. So now Macbeth meets the two murderers and he looks at them and he says, "What is? Was it not yesterday, friend, we spoke together? बोला हम लोग कल मिले थे ना." It proves that Macbeth has been meeting this murderer for quite a long time because he wants to instigate them, indoctrinate them, brainwash them, change them, make them feel that Banco is their enemy. So he has been meeting with them quite often. First murderer is saying, "Yes, sir. Yes, my lord. Yes, your highness. We met yesterday." Macbeth. Well then, no, you have considered my speeches. Macbeth is saying, did you think about my speeches? मैंने जो बताया था उसके बारे में तुमने सोचा? No, it was he. Macbeth is saying to the two guards, the two murderers, he's saying, listen, no, it was he. जान लो कि वो बैंको था, बैंको था वो. In the past, who has kept you under fortune, जो तुमको गरीब रखा, fortune मतलब पैसे से दूर रखा है. And which you have been thought our innocent self. He says, तुमने हमको गलत समझा, I was innocent. Actually, it was मैकबेथ, सॉरी, एक्चुअली इट वाज बैंको. मैकबेथ बोल रहा है कि तुमने समझा कि मैकबेथ ने गलत किया. नहीं नहीं नहीं, गलत थे तुम लोग, हम तो इनोसेंट थे. Actually, it was Banco in the past who has kept you under fortune, which you thought have been our innocent self. तुमने क्या समझा, मेरा innocent self मतलब मैंने किया है. These I made good to you. These I explained to you. So Macbeth is saying to the two murderers, okay, did you think about my speeches? Listen, I told in the last meeting that it was Banco actually who kept you under poverty. It was Banco who actually made you in bad condition, and you always thought I've been me, Macbeth. No. I was innocent. It was actually Banco. So Macbeth murders को समझा के बार बार बोल रहे, हम नहीं थे तुम्हारे बर्बादी के कारण, तुम्हारे बर्बादी का कारण कोई और है, वो इंसान का नाम है बैंको, नॉट मैकबेथ. You say this I made good to you in the last conference. बोल रहा हम तुमको ये लास्ट मीटिंग में सब समझा दिए थे. पास्ट इन प्रोबेशन, एक एक पॉइंट समझा दिए थे हम तुमको कि तुम कैसे यू आर बॉर्न इन हैंड मतलब कैसे तुमको मुट्ठी में रखा गया ताकि तुम बढ़ो ना. हाउ यू क्रॉस में चीटेड, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, किसके साथ साजिश रच के तुमको गरीब किया गया. सो मैकबेथ इज सेइंग टू द टू मर्डरर्स के लिसन, हाउ यू वर पास्ड इन प्रोबेशन, मतलब तुमको धीरे धीरे एक एक पॉइंट हम करके समझा दिए थे ना कि तुमको कैसे चंगुल में रखा गया, कैसे तुमको धोखा दिया गया, चीटिंग किया गया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करके तुमको गरीब किया गया. ऑल थिंग्स एल्स माइट हाफ ए सोल एंड नेशन क्वेस्ट सेइंग. ये सब सुनने के बाद जिसका हाफ ए सोल है, मतलब सोल यहाँ मतलब माइंड, इसका दिमाग हाफ है, जो पागल है वो भी बोलेगा हाँ सर आप सही बोल रहे. दस डिड बैंको, बैंको ही नहीं ऐसा किया, बैंको की वजह से हम गरीब है. फर्स्ट मर्डर इज सेइंग सर यू मेड इट नोन टू अस, कल तो आप हमको ये बताए थे. मैकबेथ इज सेइंग यस आई डिड सो, व्हिच इज नॉट द पॉइंट ऑफ सेकंड मीटिंग. सो इज सेइंग कि हाँ, अब ये हमारे मीटिंग का सेकंड पॉइंट. Do you find your presence so predominant in university? You can let this go up. So Macbeth is saying कि बैंकों ने तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत किया है और तुम इसको माफ कर दोगे. Will you let this go off? Will you forgive? Is
पेशेंस और प्रीडोमिनेंट इन योर नेचर, मतलब तुम्हारे नेचर में पेशेंस, सबर, फॉरगिवनेस क्या इतना ज्यादा है कि तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन बैंकों को माफ कर दोगे? Are you so gospel that you can let this man walk? He's saying that gospel is a chapter in Bible which teaches you to forgive your enemies. So he's saying कि क्या तुम gospel के उस chapter पे इतना विश्वास करते हो कि will you forgive your enemy? Will you pray for Banco who has made you beggar? Those heavy and cruel hand has brought you to the grave, and to the other has made you beggar forever. He's saying कि बैंकों की वजह से तुम लोग कबर तक चले गए, मतलब कबर जैसा हालत हो गया है, और तुम्हारा फैमिली बेघर हो गया. सो विल यू प्रे फॉर दिस मैन? आर यू सो गॉस्पल? गॉस्पल इज अ चैप्टर इन बाइबल that teaches you to pray for your enemy, be good to them, be good to your enemy, forgive them. So he's saying कि क्या तुम इतने अच्छे इंसान हो, गॉस्पल के मानने वाले हो, कि तुम अपने दुश्मन के बच्चों और बच्चों दुश्मन के लिए प्रेयर करोगे? वो दुश्मन जो तुमको हमेशा हमेशा के लिए गरीब बना दिया, वो दुश्मन जो तुमको हमेशा हमेशा के लिए बेघर बना दिया है. तो मर्डर्स आर सेइंग, सर हम लोग इंसान है, कोई फरिश्ते, कोई एंजल, कोई ग्रेट मैन नहीं. Macbeth is saying yes. In the catalog you go for man. He says हाँ, लिस्ट के हिसाब से तो तुम इंसान हो. जैसे कुत्ता का भी बहुत सारा क्वालिटी होता है, बहुत सारा नाम होता है, स्पीसीज होता है. जैसे कुछ कुत्ते का नाम होता है हाउंड, किसी का नाम होता है ग्रे हाउंड, किसी का नाम होता है मॉन्ग्रेल, किसी का नाम होता है स्पैनियल, किसी का नाम होता है रग्स, किसी का नाम होता है वाटर रग्स, किसी का नाम होता है डेम्यूल्फ. दे आर ऑल कॉल्ड बाय द नेम ऑफ डॉग. सब कुत्ते ही हैं, मैंने डॉग ही है, चाहे वो मॉन्ग्रेल हो, वाटर रग्स हो, डेनियल हो, सब. And the valued file distinguishes the swift and the slow. He's saying the list of specialization separates all dogs. Some dogs are swift, so there's a list for them. Some dogs are slow, so there's a list for them. Some dogs are subtle, माने clever. Some dogs are housekeeper, वो घर का देखभाल करते हैं. कुछ कुत्ते hunting में help करते हैं. So based on the quality, they are all divided. And everyone are divided according to the bounteous, माने kind nature has given them. So the quality that is given by nature, based on that, they are all divided. Whereby he does receive a particular addition from the bill. मतलब based on this, they have all got special quality, special list. तो मैकबेथ इज सेइंग कि कुत्तों का बहुत जात होता है. वो जात अलग अलग होता है उनके स्किल पे, उनके टैलेंट पे, काबिलियत पे, वो कैसे हैं. जैसे कुछ कुत्ते हाउस कीपर होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कोई सटल SCBT सटल में क्लेवर, कुछ लोग स्विफ्ट होते हैं, कुछ लोग और जैसे नेचर बॉन्टियस नेचर ने उनके क्लोज मतलब इनक्लोज कर दिया उनके अंदर वो क्वालिटी, उस क्वालिटी के हिसाब से वो अलग अलग होते हैं. Whereby, therefore, he does receive particular addition from the bill based on the quality. They have got a special name, surname, title according to the list. मतलब सब कुत्ते ही हैं, लेकिन कुत्ता हंटर है तो उसको एक नाम मिला है, कोई कुत्ता हाउस कीपर है तो उसको एक नाम मिला है, कोई आर्मी में तो उसको एक नाम मिला है, कोई नॉर्मल डॉग है जो घर में पेट के लिए रहता है उसके लिए अलग नाम है. सो दिस पर्टिकुलर एडिशन, मतलब दिस पर्टिकुलर क्वालिटी सेपरेट्स देम. अदरवाइज देर आर अलाइक. अगर according to the gift that nature has given them, based on that they have got particular name, particular skill. अगर वो हटा दिया जाए तो सब बराबर है. सो ऑफ मैन, इंसान के लिए भी वैसे ही है, सब इंसान ही है, लेकिन कोई प्रेसिडेंट है, कोई गवर्नर है, कोई आर्मी मैन है, कोई मर्डरर है, कोई रेपिस्ट है, कोई गैंग रेप किया है. So based on that, everybody is separated. So indirectly is saying कि कुत्तों का जैसा बहुत सारा स्पीसीज होता है, वैसे इंसान के भी बहुत सारे स्पीसीज होते हैं. Now, if you have a station in the file, मतलब if you have a ranking in the list of mankind, not in the worst rank of manhood, he's saying कि अगर इंसान के लिस्ट में तुम्हारा नाम अगर सबसे नीचे नहीं है, so I will put this business in your bosom. मतलब ये सब काम तुम्हारे हवाले, ये सीक्रेट अब तुमको हम बता देंगे, ये बैंकों को मारने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा. दोज एग्जीक्यूशन टेक योर एनिमी ऑफ, ही सेज कि अगर ये बात एग्जीक्यूट करो ये प्लान को, तो तुम्हारा दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. एंड इट विल ग्रैपल, मतलब ब्रिंग यू टू माय हार्ट, मेरे दिल के करीब हो जाओगे. एंड यू विल गेट माय लव. गेटिंग लव फ्रॉम द किंग मींस पावर, पोजीशन, मनी, सम रिसोर्सेस. सो ही सेइंग कि अगर तुम इंसान के लिस्ट में सबसे नीचे नहीं हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हवाले है. और ये करने से यू विल बी ग्रैपलिंग टू मी, मतलब यू विल बी ब्रिंग, यू विल बी बॉट नियर टू मी.
तुम मेरे दिल के करीब हो गए, मेरे दिल के करीब मीन्स पैसा मिलेगा तुम्हें, एंड यू विल गेट लव फ्रॉम मी। Who wears our health but sickly in his life. This line means कि as long as Banco lives, my life is sickly. मेरा लाइफ बीमार है। Which in his death were perfect. कि एक बार Banco मर जाए तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। So Macbeth means to say that as long as Banco lives, his life is in danger. His life is in trouble. Second murder. Second murder is saying, sir, I am one, my lord, whom wild blows and buffet have so insane, irritated that I am reckless to do what I to hate the world. He says, sir, the life has given me so much of blows, means I've been the victim of so many things in life that I'm so irritated. Insane man irritated. I'm indifferent. कि दुनिया से नफरत करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार. First murder. I'm another. First murder saying हम भी एक हैं. I'm so weary with disaster. He says कि मैं थक गया हूँ disaster से. Tugged with fortune मतलब मेरा फाइनेंशियल हालत इतना नीचे चला गया है कि I would set my life on any chance to mend it or get rid of it. He says कि मेरा लाइफ इतना गरीब हो गया, I'm so poor कि हम अपने लाइफ को ठीक करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, या तो लाइफ ठीक हो जाएगा या तो हम मर जाएंगे, दो में से एक होगा. Means he is ready to get rid of the life or to mend it, means to repair or make it better. So he's saying I would set my life on any chance. हम कुछ भी करने के लिए तैयार, या तो लाइफ को बेहतर बना देंगे या तो लाइफ से फ्री हो जाएंगे. Macbeth is saying, both of you know Banquo is their enemy. Macbeth is saying, तुम लोगों को तो पता है Banquo is their enemy. Murderers are saying, yes, my lord, yes. So is he mine. Macbeth is saying, वो तुम्हारा दुश्मन भी है, मेरा भी है. And in such bloody distance that every minute of his life thrust against the nearer of his. He's saying कि Banquo का एक एक सेकंड मेरे लिए मौत, मेरे लिए पेन है. So there's such bloody distance that every minute of his being thrust against the nearer of my life. Means उसका जिंदगी का एक एक पल मेरे लाइफ के अगेंस्ट है. Though I could with barefaced power sweeping from my sight and vouch my will, he says कि हम चाहें तो बैंकों को अपने ओपन पावर से मार दें. And bid my will vouches it. मतलब हम अपना ओपन पावर, आर्मी पावर ओपनली सबके सामने बैंकों को मार दें. And give my will vouch it, मतलब justify it by saying it's king's order. तो इस saying कि अगर हम चाहें with open power हम हटा सकते हैं. किसको? बैंकों को. और अपना बता सकते हैं कि आई एम डूइंग इट बिकॉज आई एम ए किंग, ये टाइम मस्ट नॉट. ये बोले लेकिन ये हम नहीं करेंगे. क्यों? फॉर सर्टेन फ्रेंड्स दैट आर बोथ हिज एंड माय दोस लव आई डू नॉट वांट टू ड्रॉप. ही सेज कि कुछ कॉमन फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड है जो बैंकों के भी है, मेरे भी है. कॉमन पब्लिक में मेरा इमेज खराब होगा. सो ही सेज आई विल नॉट डू इट. आई विल नॉट किल हिम ओपनली. He's saying I can't lose the love of common people, but a whale is fall whom I myself will struck down. He says कि हम खुद ही उसको प्लान करा के मर्डर करा देंगे, लेकिन I will cry at his death. And hence it is that I do to your assistant to make love. He says इसीलिए हम तुम्हारा हेल्प चाह रहे हैं. He says कि this is the reason I want your help, murderer's help. Otherwise, with open power I can kill him. Masking the business from the common, he says कि हम इसीलिए चाहते हैं कि मर्डर जो है कॉमन पब्लिक के नजर से छुप के रहे. फॉर सन्ड्री वेटी रीजन, फॉर वेरियस रीजंस. सेकंड मर्डर, वी शैल माय लॉर्ड परफॉर्म व्हाट यू कमांड अस. सेकंड मर्डर सेज, हाँ सर, हम लोग आप जो बोले हम लोग परफॉर्म करेंगे. So here Macbeth gives the reason that he can openly with barefaced power, with naked powers, army power, he can openly kill Banquo and justify it, vouch it, say it that it is king's will, but he would not do it. Why? Because there are certain people, certain common cabinet people, common people, ministers, whose love he cannot lose, जिनका सपोर्ट मैकबेथ खोना नहीं चाहता. मैकबेथ नया नया किंग बना है. मास्किंग द बिजनेस फ्रॉम द कॉमन आइजेस, कि हम सब कॉमन लोगों से इसको छुपा के करना चाहते. तो सन्ड्री वेटी रीजंस बोल रहा, वेरियस मिसलिनियस रीजंस है, इसकी वजह से भी सब छुपा के करना चाहते हैं. सेकंड मर्डर, वी शैल माय लॉर्ड परफॉर्म व्हाट यू कमांड. सेकंड मर्डर बोला, सर आप जो बोलिएगा हम लोग परफॉर्म कर देंगे. फर्स्ट मर्डर, दो अवर लाइफ, फर्स्ट मर्डर बोला हम लोग का लाइफ भी रिस्क हो जाए तो. मैकबेथ लुक्स एट देम एंड सेज योर स्पिरिट साइंस थ्रू यू. तुम लोग को देख के लग रहा है यू आर स्पिरिटेड, यू आर रेडी टू डू इट. विद इन दिस आवर आई विल एडवाइज यू वेयर टू प्लांट योरसेल्फ. मैकबेथ सेज कि हम अभी तुमको थोड़ा देर में बता देंगे कि तुम लोग को कहाँ रहना है. एक्वाइंट यू द परफेक्ट स्पाई ऑफ टाइम, बोले एग्जैक्ट कौन से टाइम पे कहाँ रहना है.
द मोमेंट ऑफ इट, कौन सा मोमेंट में करना है, एंड इट मस्ट बी डन टुनाइट, ये मर्डर आज ही रात को करना है। समथिंग फ्रॉम द पैलेस गेट, मतलब पैलेस से थोड़ा दूर दूर जंगल है वहां पे। And always thought that I would require a clearness. He says कि सुनो, मर्डर होना और इसमें हमको कोई भी फ्लॉज, कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए। And with him leave no rubs or blotches in the work, और कोई मिस्टेक उस्टेक हमको नहीं चाहिए। Fleance his son who accompanies his, whose life is no less material to me than his father. He says कि बैंको के सन उसका बेटा फ्लियंस भी जा रहा है, जिसका लाइफ मेरे लिए उतना ही डेंजर है जितना बैंको का। एंड ही मस्ट एम्ब्रेस द सेम फेथ, उसका भी हाल वही होना चाहिए फ्लियंस का जो बैंको का होगा, मतलब बैंको के साथ उसका बेटा फ्लियंस भी मरना चाहिए। रिजॉल्व योर सेल्फ अपार्ट, आई विल कम टू यू। सो मैकबेथ इज सेइंग टू द मर्डर्स कि जाओ मनी मैन में तैयार हो जाओ, थोड़ा देर में फिर हम आते। मर्डर लोग बोला सर वी आर रिजॉल्व, वी आर रेडी। So Macbeth says, okay, I will call you very soon. Go, he says, एक अंदर से तहखाना जैसा सीक्रेट प्लेस है, saying तुम लोग वहां रहो. Very soon I will come and inform you when to go and kill Banquo. So here Macbeth is talking to the murderer and he says that he wants to kill them. I mean, kill Banquo and his son Pliens, and Pliens should be killed along with Banquo. And he says कि I want clearness, clear cut होना चाहिए, कोई मतलब कोई कोई मिस्टेक, कोई फ्लॉ, कोई अधूरा काम, कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए। एंड देन ही सेज कि Banquo should die along with Fleance, and he says go and get ready, the murder says we are ready. So Macbeth says very soon I will tell you when to do it. And then Macbeth is talking to himself and says it is concluded. So Macbeth says कि तब तो फिक्स हो गया कि बैंको अगर तुम्हारा सोल आज हेवन में जाएगा तो आज ही जाएगा। So Macbeth says that if your soul will go to heaven, it will go tonight. It proves that Banquo was a good human being because Macbeth, even talking to himself, is saying Banquo will go to heaven. So this proves the integrity and the strength of character of Banquo. So you can write in the answer of Banquo's character. So here this scene ends where Macbeth decides that he will kill Banquo. And he is ready. He has become an best uh, hypocrite, where he's planning the murder of Banquo, inviting him to the feast, telling him your horses go very fast, your horses go become very sure-footed, and he's planning the murder of that person. So we see a very 360-degree change in the character of Macbeth. And Macbeth was called as Bellona's bridegroom, valorous, venient, peerless kinsman, too full of milk of human kindness. And here is Macbeth planning his best friend's murder, inviting him to the party as a chief guest. So this was Act 3, Scene 1. Thank you for watching.